Okay, today the topic of our discussion is the critique on modern society. And yesterday lecture we discussed critique on positivism, critique on Marxism, and critique on sociology. Today we will discuss the critique on modern society of the critical school. Critical school actually criticized different components of the modern society. These components are actually specifically related with the oldest tradition of the economy, that previously economy played pivotal role in the capitalist society, but they shifted their orientation to the cultural level and realities of the modern capitalist society. Still, critical school still retains its interest in domination. The main crux of the critical school regarding the modern society is to analyze domination in every sphere of the modern society. Domination. Because capitalist society is basically based on the domination. So they are frequently criticizing these dominating factors in the modern society, because domination not only based on economic basis, but rather it is based on a cultural level as well. As we discussed before, that the traditional Marxism basically overemphasized on the role of the economy, but later on, when the critical school developed, they actually brought Marxism from economic sphere to the cultural sphere or the cultural realm. So they say that domination is not only based on the level of economy, but it is also based in a cultural level as well. Domination in modern society, it is not only based on economic basis. ये सिर्फ economic basis पे नहीं है, but it exists everywhere in the modern society. Simply, they say that modern society, especially modern capitalist society, it repress individuals. This whole system is based on the repression, to repress individuals. ठीक है? ये जो मॉडर्न सोसाइटी में स्पेशली कैपिटलिस्ट सोसाइटी को वो रिफ़र करते हैं कि कैपिटलिस्ट सोसाइटी में रिप्रेशन है, ये इंडिविजुअल्स को रिप्रेस करता है, ठीक है, उनके जस्ट नीड्स को रिप्रेस करता है, उनकी ख्वाहिशात को, उनके इमोशंस को रिप्रेस करता है. तो ये ओवरऑल जो मॉडर्न सोसाइटी है ये रिप्रेशन पे बेस्ड है, इसमें कल्चरल रिप्रेशन पाया जाता है. अच्छा, अब इसमें जब हम क्रिटिक ऑन सोसाइटी की बात करते हैं तो क्रिटिकल स्कूल के अंदर इस टाइम एक स्पेशलाइज्ड स्कूल या एक स्पेशलाइज्ड ओपिनियन ये बना कि they not only revisited the work of Karl Marx, but they also focused on the work of Max Weber as well. जिस तरह मार्क्स
की बजाय या मार्क्स के साथ साथ उन्होंने वेबर पे भी फोकस किया कि वेबर ने स्पेशली ही वर्कड ऑन द रैशनैलिटी which is the prominent feature of the modern society, rationality. वेबर ने रैशनैलिटी पे कहा। अगर आपने वेबर को पढ़ा हो तो वेबर हमेशा रैशनलाइजेशन की बात करता है, रैशनैलिटी, कि मॉडर्न सोसाइटी is different from the pre-modern society on the basis of rationality. That modern society is organized in a rational system. जदीद मुआशरा क्या है? रैशनलाइज्ड सोसाइटी है, ये रैशनैलिटी पे बेस्ड करता है। ठीक है, अच्छा अब रैशनैलिटी अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर, दिस इज द मोस्ट डोमिनेंट फीचर of the modern society, and it actually, the supporters of this approach is called, they are actually labeled as Weberian Marxists. जो लोग ये ओपिनियन रखता है या रखते हैं तो इसको हम वेबरियन मार्क्सिस्ट कहते हैं, क्योंकि they are also at the same time they are also focusing on the work of Max Weber as well. कि Max Weber is also relevant to the modern society because he actually highlighted the main characteristics of the modern society on the basis of rationality. Now they furthermore they actually differentiate between the Weber's concept regarding rationality. Weber actually discriminate between two types of rationalities. The one is called formal rationality and the other one is called substantive. These Weberian Marxists, they actually differentiated between these two types of rationalities, formal and substantive rationality. ठीक है? Now, according to Trent Schroer actually says that the view of the critical school, which is specifically related to the modern society, is actually based on the repression, and that repression is actually created by the rationality. ठीक है, ये जो हम repression की बात करते हैं, ट्रेंट श्रोअर कहता है कि ये repression, this repression is actually produced by these processes of rationality. मॉडर्न सोसाइटी में जो रिप्रेशन पाया जाता है, जो सुप्रेशन पाया जाता है, जो एक्सप्लॉयटेशन पाया जाता है, वो बेसिकली किस वजह से है? इट इज बिकॉज ऑफ द रैशनैलिटी। ये रैशनैलिटी की वजह से है, और ये जो हम सो कॉल्ड रैशनैलिटी से मुतासिर है मॉडर्न सोसाइटी में, तो ये बेसिकली रैशनैलिटी ने प्रोड्यूस किया है। एंड इट आल्सो बेस्ड ऑन द इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन एज वेल एज कल्चरल डोमिनेशन, विच इज़ द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ द मॉडर्न सोसाइटी। ठीक है, ट्रेंट श्रोअर ने इसको अपने वर्ड्स में इसी तरह एक्सप्लेन किया है कि मॉडर्न सोसाइटी में जितनी भी प्रॉब्लम्स पाए जाते हैं, ठीक है, वो प्रॉब्लम्स एक्चुअली क्रिएट किए गए हैं किस चीज़ ने? रैशनैलिटी। ठीक है, रैशनैलिटी इज द मोस्ट रिस्पॉन्सिबल फैक्टर फॉर द ओवरऑल रिप्रेशन एंड डोमिनेशन इन द मॉडर्न सोसाइटी। ठीक है, तो इसको फिर वेबर जब डिफ्रेंशिएट करता है बिटवीन फॉर्मल एंड सब्सटेंटिव रैशनैलिटी, तो फॉर्मल एंड सब्सटेंटिव रैशनैलिटी
में फ़र्क है और बहुत फंडामेंटल फ़र्क है अकॉर्डिंग टू द क्रिटिकल थ्योरिस्ट कि फॉर्मल रैशनैलिटी it is actually concerned unreflectively or implicitly with the question of the most effective means for achieving any given purpose. So, formal rationality is actually guided by the specified goals. It actually achieves certain specified goals in the modern society. ठीक है? Formal rationality is the most conscious form of the rationality through which certain vested interest groups are trying to achieve their desired goals. ठीक है? Formal rationality वो टाइप है रैशनैलिटी का कि ये एक पूरा ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम है और इस सिस्टम के अंदर इसका जो एंड गोल है वो एंड गोल ये है कि लोगों को किस तरह रिप्रेस किया जाए, लोगों को किस तरह एक्सप्लॉइट किया जाए। मतलब ये एक कॉन्शियस एफर्ट है जो मॉडर्न सोसाइटी में चलता है। जो कैपिटलिस्ट क्लास है या जो एलीट क्लास है वो इंटेंशनली ऐसा करते हैं। मतलब इस बात से मुराद ये है कि दे आर इंटेंशनली ट्राइंग टू एक्सप्लॉइट पीपल, दे आर इंटेंशनली बिजी टू मेक अ सिस्टम मोर एक्सप्लॉइटेटिव। ठीक है? तो फॉर्मल रैशनैलिटी से यहाँ पे मुराद ये है जो क्रिटिकल स्कूल या वेबरियन मार्क्सिस्ट इसको इसी तनाजुर में देखते हैं। ठीक है कि फॉर्मल रैशनैलिटी जो है ये बेस्ड करता है एक्सप्लॉइटेशन पे और डोमिनेशन पे। ठीक है? अच्छा, फर्दर मोर दे फर्दर एक्सप्लेन्स फॉर्मल रैशनैलिटी इन टेक्नोक्रेटिक थिंकिंग, that formal rationality is guided by technocratic thinking, to think technically। ठीक है? ये technocratic thinking है in which the objective is to solve the forces of domination. This is a kind of technocratic thinking through which they are trying to achieve their desired goals, and that goals would be based on the process of domination। ठीक है? ये डोमिनेशन पे बेस्ड करता है। ये एक टेक्नोक्रेटिक थिंकिंग है। वो प्लानिंग करते हैं, प्लानिंग के साथ ये टेक्निकल होता है, ये कॉन्शियस होता है। ठीक है? कि हम किस तरह लोगों को डोमिनेट करें, किस तरह सोसाइटी में लोगों को हम एक्सप्लॉइट करें। ठीक है? ये एक टेक्नोक्रेटिक थिंकिंग है जिसके ज़रिए जो एडवांटेजियस क्लास है वो लोगों को क्या करते हैं, डोमिनेट करते हैं, उसको एक्सप्लॉइट करते हैं। एंड द अल्टीमेट गोल of this technocratic thinking is to achieve domination, not to emancipate people from that particular domination। इसमें लोगों को निजात के लिए कोई राह नहीं है। ये लोगों को फर्दर अपने ऐसे इंट्रिकेट सिस्टम्स में इन्वॉल्व करते हैं कि वो उसके असर से आज़ाद ना हो जाए। मतलब ये उसको फर्दर टेम करते हैं लोगों को। ये टेक्नोक्रेटिक थिंकिंग, ये एक टेक्निकल प्रोसेस है जो मॉडर्न सोसाइटी में होता है। ठीक है? कि किस तरह लोगों को अपने शहर में उसको जकड़े अपने शहर में ताकि वो उनसे बाहर न निकले। ठीक है? तो ये एक टेक्निकल थिंकिंग है और ये टेक्निकल थिंकिंग का जो अल्टीमेट एंड गोल है वो एंड गोल डोमिनेशन है कि हम किस तरह लोगों को डोमिनेट करें, न कि लोगों को हम निजात दें, न कि लोगों को हम आज़ादी दें, न कि लोगों को हम सहूलियात दें। ठीक है?
ये लोगों को अपनी तरफ गुलाम बनाने की, या एनस्लेव, ये लोगों को एनस्लेव करता है, ये टेक्नोक्रेटिक थिंकिंग। ठीक है। नाउ substantive rationality, according to the Weberian Marxists, this type of rationality is the most positive type of rationality, which is broadly guided by reason. There is a huge contrast between formal rationality and substantive rationality, because formal rationality is technocratic thinking, while substantive rationality is based on reason, अकल जिसको हम कहते हैं, reason. तो ये substantive rationality, unlike formal rationality, is the most positive thing in a society, which has no significant role in the modern society, because modern society is wholly solely dominated by the formal rationality. कि मॉडर्न सोसाइटी में फॉर्मल रेशनैलिटी ज़्यादा है, इसमें सब्सटेंटिव रेशनैलिटी बहुत कम है, इसकी कमी है। ठीक है, क्योंकि ये रेशनैलिटी रीज़न गाइड करती है। अच्छा, किस तरह? बिकॉज दे से दैट रीज़न ऑलवेज गिव होप टू पीपल। रीज़न हमेशा लोगों को एक उम्मीद दिलाता है, एक होप दिलाती है। ठीक है, और रीज़न अनलाइक द फॉर्मल रेशनैलिटी, द एंड रिजल्ट ऑफ द रीज़न इज the ultimate emancipation of humans, especially according to Weberian Marxists, reason actually provide human values, it provide justice to humans, it lead towards peace in a society, and it also ensures happiness to the individual, because the goals of the two types of rationalities are different. ठीक है, formal rationality is ultimately enslave people, while the substantive rationality or reason is actually emancipate people from the shackles of enslavement. ठीक है, ये लोगों को गुलामी से निजात दिलाता है, जो सेकंड टाइप ऑफ रेशनैलिटी है, सबस्टेंटिव रेशनैलिटी, because this type of rationality is based on reason, which ultimately guide society towards respect for human values, which ensures peace in a society, which in a broader sense it promotes humanity in a society. ठीक है, तो there is a huge difference, there is a stark difference between these two types of rationalities according to Weberian Marxists. And they, at that time, they have given the example of the former Germany in the form of Nazism. Hitler, the system of the Hitler was actually based on the formal rationality. ये फॉर्मल रेशनैलिटी का उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है कि नाजिज़म जो हिटलर का सिस्टम था जर्मनी में, which was ended in 1945 after the end of the Second World War. ये दूसरी जंग अज़ीम के बाद हिटलर का जो नाजिज़म था वो ख़त्म हुआ। ये इसका एग्जाम्पल इन्होंने फॉर्मल रेशनैलिटी से दिया है, because they say that Nazism is the mortal combat with reason. कि the whole system of the Nazism was based on hatred. It was not based on the reason. ये reason पे कभी भी मबनी नहीं था, इसमें अक्ल नहीं था। ठीक है, इसमें सिर्फ नफरत थी, and hatred towards a specific nation or specific ethnic group. ठीक है, Jews के खिलाफ उनका नफरत इतना ज़्यादा था कि they organizedly killed millions of Jews at that time. ठीक है, तो this was the example of formal rationality according to the Weberian Marxists. कि फॉर्मर जर्मनी में
नाजिज्म इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। नाउ फर्दर मोर दे आल्सो से दैट मॉडर्न सोसाइटी इज राइप ऑफ रैशनैलिटी बिकॉज we admit that modern society is basically based on the intricate or the complex rational systems। हम जिस सोसाइटी में आज रहते हैं ये एक हकीकत है कि सोसाइटी, आज की जो सोसाइटी है, जो मॉडर्न सोसाइटी है, ये एक कम्प्लेक्स सिस्टम में जकड़ा हुआ है। क्योंकि आज जिस जदीद दौर में हम रहते हैं तो जदीद दौर में हमने बहुत सी चीज़ों को रेशनलाइज किया है, ठीक है। हमने साथ साथ इसके बहुत आसानियाँ भी पैदा किए हैं ह्यूमंस के लिए, ये भी एक हकीकत है। लेकिन कुछ मार्क्सिस्ट या वेबरियन मार्क्सिस्ट कहते हैं कि हम इस रेशनैलिटी को नहीं मानते। ये जो मॉडर्न सोसाइटी में जो रेशनैलिटी चलती है ना आजकल, इस रेशनैलिटी को हम नहीं मानते बिकॉज दिस इज नॉट एक्चुअल रेशनैलिटी। दे टर्म्स इट एज irrationality ऑफ द रेशनैलिटी, irrationality ऑफ रेशनैलिटी। ये सिस्टम irrational है। दिस इज कॉल्ड irrationality ऑफ rationality, ठीक है। अच्छा, अब irrationality स्पेशली और इफ वी मोर स्पेसिफाई इट, irrationality ऑफ फॉर्मल रेशनैलिटी, कि फॉर्मल रेशनैलिटी इज एक्चुअली irrationality, ठीक है। ये रेशनैलिटी नहीं है, ये irrationality है बिकॉज द वेरी सोल ऑफ दिस rationality is based on hatred. It is based on domination. It is based on repression. It intentionally tries to repress people in a society. Now, according to Herbert Marcuse, this was Herbert Marcuse, he was a critical thinker. Herbert Marcuse says that although it appears to be the embodiment of rationality, simply we often see that modern society is rational. It is the embodiment of rationality, but in its actual sense the whole modern system is irrational. हमें नज़र आता है कि द सोसाइटी इज़ बेस्ड ऑन रेशनैलिटी, लेकिन एक्चुअली ये irrational सिस्टम है। क्यों irrational सिस्टम है? ये बेसिक ह्यूमन वैल्यूज़ की रिस्पेक्ट नहीं करता, ठीक है। ये बेसिक ह्यूमन नीड्स को फुलफिल नहीं करता। आज देख ले ग्लोबली कि मॉडर्न सोसाइटी में जो सबसे ज़्यादा वेल्दी सोसाइटीज़ है, ठीक है, वो आज भी एक्सप्लॉयटेशन में लगा हुआ है। वो आज भी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ को एक्सप्लॉयट कर रहे हैं। अगर हम इसको ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में देख लें, अगर आप ग्लोबली देख लें ना, जो अमेरिका है, अमेरिका अपने आप को बहुत रेशनल सोसाइटी कहती है, लेकिन वो एक्चुअली इर्रेशनल है। वो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को डोमिनेट कर रहे हैं, वो रिप्रेस कर रहे हैं, ग्लोबल ऑर्डर को उन्होंने अपने कब्जे में लिया हुआ है, ठीक है। वो जो चाहता है कर सकते हैं, ठीक है। ये क्या है? रिप्रेशन है ना। आप थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को रिप्रेस कर रहे हैं, आप उनकी रिसोर्सेस को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, आप उनके रॉ मटेरियल्स को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, ठीक है। आप उसको हर स्फीयर में डोमिनेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक्चुअली मार्कूसे कहता है कि वी ऑफन सी दैट मॉडर्न सोसाइटी इज द एम्बॉडीमेंट ऑफ रेशनैलिटी, बट इन इट्स एक्चुअल सेंस इट इज irrational. The whole system is based on irrationality, because the ultimate goal of this rationality is to
अचीव डोमिनेशन, कि हम किस तरह दूसरों को डोमिनेट करें, ठीक है। क्योंकि इसकी वेरी फिलॉसफी जो है इस मॉडर्न रैशनल सिस्टम का, वो डोमिनेशन है, कि हम किस तरह डोमिनेट करें, हम किस तरह रिप्रेस करें लोग, ठीक है। अच्छा, द सोसाइटी according to him that the whole modern system is irrational, and it is irrational that the rational world is destructive of individuals, because this system is irrational because it is destructive for individuals. ये इंडिविजुअल्स को डिस्ट्रक्ट कर रहे हैं, मतलब उसको डिस्ट्रक्शन की तरफ माइल करते हैं, एंड इट आल्सो एक्सप्लॉइट्स देयर नीड्स एंड एबिलिटीज, एंड दिस व्हाट टाइप ऑफ रैशनैलिटी इज दिस दैट वी आर कंटिन्यूअसली मेकिंग wars for peace. Peace is always maintained through the threat of war. ये किस तरह का रैशनल सिस्टम है? मार्कूजे कहता है कि हम पीस को एस्टेब्लिश करने के लिए हमेशा जंग करते हैं, पीस को हम जंग के जरिए हासिल करते हैं। किस तरह का ये रैशनैलिटी है? ठीक है, हम हमेशा पीस को जब अचीव करते हैं तो हम लॉजिक ये देते हैं कि हम जंग के जरिए पीस को हासिल करेंगे। अमन तब आएगा जब हम जंग करेंगे। तो ये किस तरह का रैशनल सिस्टम है? ये तो एक्चुअली इर्रेशनल है, मार्कूजे कहता है। बिकॉज पीस इज मेंटेन्ड थ्रू अ कांस्टेंट थ्रेट ऑफ वॉर। हम हमेशा जंग के दिहाने पे होते हैं। ठीक है, ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में देख ले कि मुल्क किस तरह एक दूसरे के दर पे है, किस तरह वो एक आम रेस में लगे हुए हैं, किस तरह वो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजीज को प्रोलिफरेट कर रहे हैं। हर मुल्क की कोशिश करता है कि मैं एटॉमिक पावर बनूं, मेरी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो जाए कि दूसरा मुझे बुरी निगाह से न देखे। तो ये किस तरह का रैशनल सिस्टम है? ठीक है, कि पीस जो है, अमन जो है, वो हमेशा वार का जो थ्रेट है उसके जरिए मेंटेन होता है। तो ये किस तरह का रैशनल सिस्टम है? इसको ये लोग चैलेंज कर रहे हैं। ठीक है, एंड अगेन दे से दैट डिस्पाइट सफिशिएंट रिसोर्सेज एंड डिस्पाइट सफिशिएंट मीन्स पीपल स्टिल रिमेन एम्पोरिश्ड। फिर गुर्बत क्यों है दुनिया में बजाय बहुत ज़्यादा वसाइल के? क्यों भूख से बच्चे मर रहे हैं ग्लोबली? क्यों मल न्यूट्रिशन के शिकार है दुनिया के जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के बहुत से बच्चे हैं, उनमें इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट फिर क्यों है? इतनी एम्पोरिशमेंट क्यों है डिस्पाइट सफिशिएंट मीन्स? हम कहते हैं ना कि ग्लोबली दुनिया का जो पूरा वेल्थ है, जितनी दौलत है दुनिया के लेवल पे, वो 10% लोगों के कब्जे में है। The 70% wealth of the entire world is circulated in the hands of the 10% people. दुनिया का 70% दौलत 10% लोगों के पास क्यों है? क्यों गुर्बत है? ठीक है, ये मार्कूजे कहता है कि डिस्पाइट सफिशिएंट मीन्स व्हाई पीपल आर एम्पोरिश्ड। क्यों लोग हेमलेट्स में रहते हैं? क्यों लोग झोंपड़ियों में रहते हैं? क्यों गुर्बत है? फिर अगर ये रैशनल सिस्टम है तो ये किस किस्म की रैशनैलिटी है? ठीक है, पीपल आर स्टिल रिप्रेस्ड and people are still exploited, and people are still unable to fulfill their basic needs. आज भी लोग अपने बुनियादी ज़रूरियात को पूरा नहीं कर सकते। बहुत से, मतलब आप
परसेंटेज वाइज देख ले दुनिया की मेजॉरिटी आबादी स्टिल इम्पूवरिश्ड है, ठीक है। गुर्बत इतनी ज़्यादा है, ये क्यों है अगर ये रैशनल सिस्टम है तो, ठीक है। सो अगेन दे से दैट द मेन फोकस of this modern society is on technology, because technology is the main contributory factor for enhancing this domination. Again, critical theorists further criticize technology in the modern society because the main dominating aspect of the modern society is based on टेक्नोलॉजी, कि ये रिप्रेशन और ये डोमिनेशन मॉडर्न टेक्नोलॉजी की वजह से है, ठीक है। टेक्नोलॉजी को भी ये लोग क्रिटिसाइज करते हैं, एंड दे आल्सो से दैट मॉडर्न टेक्नोलॉजी इज आल्सो अ काइंड ऑफ अ फॉर्मल रैशनैलिटी। मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी फॉर्मल रैशनैलिटी में आता है, बिकॉज दिस इज द मेन टूल ऑफ डोमिनेशन इन द मॉडर्न सोसाइटी। और मॉडर्न टेक्नोलॉजी इज एक्चुअली एम्प्लॉयड इन द कैपिटलिस्ट सिस्टम in the modern society, and modern capitalist society is again modern capitalist society is actually leading towards totalitarianism through technology. ये टेक्नोलॉजी के ज़रिए टोटलिटेरियनिज्म को प्रमोट कर रहे हैं, ये ह्यूमनिज्म को प्रमोट नहीं कर रहे, ये ह्यूमन वैल्यूज़ को प्रमोट नहीं कर रहे, बल्कि टोटलिटेरियनिज्म को प्रमोट कर रहे हैं। एंड दे आर स्टिल बिजी टू इनोवेट न्यू टेक्निक्स एंड न्यू मेथड्स टू कंट्रोल इंडिविजुअल्स ऑन द बेसिस ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। They are still innovating new techniques and new methods to externally control individuals through the means of technology. Modern society में आज भी ये सिस्टम वही का वही है कि टेक्नोलॉजी के ज़रिए वो लोगों को न्यू टेक्निक्स और न्यू मेथड्स के ज़रिए still they are striving to externally control them through the use of the technology. ठीक है, टेक्नोलॉजी के ज़रिए लोगों को स्टिल वो कंट्रोल कर रहे हैं। अच्छा, नाउ इफ वी टेक द एग्जांपल ऑफ द मॉडर्न मीडिया और ब्रॉडली मास मीडिया, अगर हम मास मीडिया को देख लें, या उस ज़माने में ये जो एग्ज़ाम्पल ये लोग देते हैं वो टीवी का ज़माना, टेलीविज़न टेक्नोलॉजी, ठीक है। टेलीविज़न टेक्नोलॉजी या मास मीडिया, इसका बज़ाहिर तो ये लोग ये प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि हम सोसाइटी को पेसिफाई कर रहे हैं और लोगों को सोशलाइज कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है। दे आर नॉट सोशलाइजिंग एंड नॉट पेसिफाइंग पीपल, बट दे आर एक्चुअली डोमिनेटिंग देम थ्रू दीज मीन्स ऑफ टेक्नोलॉजी। आज के इस मास मीडिया के दौर में या सोशल मीडिया के दौर में स्टिल क्या है, अल्टीमेट गोल क्या है? बिल्कुल सोशलाइजेशन नहीं है। लोगों को सोशलाइजेशन या सोशलाइज नहीं कर रहे, न लोगों को पेसिफाई कर रहे हैं, मतलब उसको अमन की तरफ राग़िब कर रहे हैं, बल्कि स्टिल वो डोमिनेशन को अचीव करना चाहते हैं। स्टिल दे आर एक्सप्लॉइटिंग पीपल, स्टिल दे आर रिप्रेसिंग पीपल थ्रू दीज मीन्स ऑफ टेक्नोलॉजी। तो क्रिटिकल थ्योरिस्ट मॉडर्न सोसाइटी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, और मॉडर्न सोसाइटी का जो डोमिनेंट फीचर है टेक्नोलॉजी, उसको भी ये लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं। अच्छा, अब मार्कूज़े, हर्बर्ट मार्कूज़े फर्दर ही सेज दैट ही रिजेक्ट्स द आइडिया दैट मॉडर्न टेक्नोलॉजी इज न्यूट्रल इन द वर्ल्ड। दिस इज
fundamentally wrong. Technology is not neutral in the modern world. हम अक्सर कहते हैं ना कि टेक्नोलॉजी इज न्यूट्रल, ये बिल्कुल गैर जानिबदार है, बट दिस इज नॉट न्यूट्रल. मार्कूजे सेज कि ये न्यूट्रल है ही नहीं. ठीक है, दिस इज नॉट न्यूट्रल एज अ होल इन द मॉडर्न वर्ल्ड, बट it is still means to dominate people. ठीक है, अगेन टेक्नोलॉजी एक ख़ास मकसद के लिए बनाई गई है और उस मकसद क्या है? टू डोमिनेट पीपल, लोगों को डोमिनेट करना, उसको एक्सप्लॉइट करना, उनको मैनिपुलेट करना, ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी का काम है. ये न्यूट्रल हो ही नहीं सकता, मार्कूजे कहता है. ठीक है, अच्छा, and this is again modern technology again trying to enslave people, and ultimately it promotes individuality across the globe. ठीक है, ये कलेक्टिविज्म को प्रमोट नहीं कर रहा, ये ह्यूमन वैल्यूज़ को प्रमोट नहीं कर रहा, ये ह्यूमन राइट्स को प्रमोट नहीं कर रहा. ये जस्ट इसके अंडरलाइंग ऑब्जेक्टिव्स जो है वो डोमिनेशन है, वो रिप्रेशन है, वो एक्सप्लॉयटेशन है. ठीक है, ये न्यूट्रल हो ही नहीं सकता. ठीक है, इट अगेन एनस्लेव्स द इनर फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल्स थ्रू मॉडर्न टेक्नोलॉजी. वो यहाँ तक कि लोगों की इनर फ्रीडम को भी डोमिनेट कर रहे हैं, उनको अंदर से मैनिपुलेट कर रहे हैं थ्रू द मीन्स ऑफ टेक्नोलॉजी. ठीक है, अच्छा, एंड अल्टीमेटली द गोल ऑफ द मॉडर्न टेक्नोलॉजी इज टू एस्टेब्लिश अ वन डायमेंशनल सोसाइटी. द गोल ऑफ द मॉडर्न टेक्नोलॉजी इज टू establish a one-dimensional society. This is again the concept of Herbert Marcuse, that modern technology leads towards the establishment of a one-dimensional society. One-dimensional society इसका ultimate goal है, in which the individuals will lose the ability to think critically and negatively about the society. The goal is to establish one-dimensional society in which people will lose sight to criticize the modern ways of exploitation. ये लोगों को अंधा बना रही है, उसको ब्लाइंड कर रही है. ठीक है, वन डायमेंशनल सोसाइटी इसका अल्टीमेट गोल है कि हम वन डायमेंशनल सोसाइटी एस्टेब्लिश करें और उस वन डायमेंशनल सोसाइटी में हम हमेशा ठीक होंगे, हम गलत हो ही नहीं सकते, हम पे कोई क्रिटिसिज्म नहीं कर सकता फिर. ठीक है, तो ये टेक्नोलॉजी का अल्टीमेट गोल है, टू एस्टेब्लिश वन डायमेंशनल सोसाइटी. अच्छा, again they say that we are not enemies of the modern technology, but we are criticizing on its usage. ये क्रिटिकल थिंकर्स कहते हैं कि हम टेक्नोलॉजी को बिल्कुल नहीं कर रहे, इसको नेगेटिवली हम नहीं लेते, हम इसकी एनिमीज़ नहीं है, इसके दुश्मन नहीं है, लेकिन इसका यूजेज पे हमारा एतराज़ है. ये जिन हाथों में है और जिस मकसद के लिए इस्तेमाल हो रहा है वो मकसद ठीक नहीं है. इसको हमने रीज़न की अचीवमेंट के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, जिसको हम सब्सटेंटिव रैशनैलिटी क्रिटिकल थिंकर्स कहते हैं. ठीक है, बट वी आर नॉट एनिमीज़ to the modern technology, but rather it is controlled by the vested interest groups in capitalism or in capitalist society. It only sustains and streamlines the continuum of domination. This actually sustains
and streamlines domination in a society. We are criticizing on the end objective of the technology, that they are continuously trying to achieve the continuum of domination, which is the prime objective of the modern capitalist society. ठीक है, हम इस चीज़ पे एतराज़ कर रहे हैं। ये लोग कहते हैं कि ये जिस मकसद के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं वो मकसद हमें कबूल नहीं है, वो मकसद ठीक नहीं है। ठीक है, and again they suggest that this fatal link should be cut through revolution. इस चीज़ को हमने बिल्कुल जड़ से उखाड़ना है, to cut it from the roots through revolution. हम इस चीज़ को इनकलाब के ज़रिए ख़त्म करेंगे, इस जड़ को हम काटेंगे ताकि ये डोमिनेशन ना रहे, ठीक है, ये रिप्रेशन ना रहे, ये एक्सप्लॉयटेशन ना रहे। ठीक है, एंड विच विल मेक टेक्नोलॉजी एंड टेक्निक्स subservient to the needs of the human beings. हम फिर ऐसा निज़ाम एस्टेब्लिश करेंगे कि टेक्नोलॉजी विल बी सबसर्विएंट टू इंडिविजुअल्स, ये तमाम इंसानों के ग़ुलाम होगी, फिर वो उनके लिए फिर काम करेगी टेक्नोलॉजी और उनकी गोल्स को अचीव करेंगे, एंड दैट गोल शैल बी बेस्ड ऑन अ फ्री मैन, कि हम इंसान को आज़ाद करें हर किस्म के डोमिनेशन से, हर किस्म के जबर से, हर किस्म के रिप्रेशन से। ठीक है, ये हम इनकलाब के ज़रिए करेंगे, रिवोल्यूशन के ज़रिए करेंगे। टेक्नोलॉजी, they again say that technology is not inherently negative or it is not inherently a problem, but it can be used to develop a just society. हम इसको ऐसा इस्तेमाल करेंगे ताकि हम जस्ट सोसाइटी को इस्टेब्लिश करें, वो सोसाइटी जो फ्रीडम पे मबनी हो, एक्चुअल फ्रीडम पे, फ्रीडम फ्रॉम डोमिनेशन, फ्रीडम फ्रॉम रिप्रेशन एंड फ्रीडम फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन। ऐसा सिस्टम या ऐसी सोसाइटी हम इस्टेब्लिश करेंगे जो तमाम किस्म के जबर से आज़ाद होगी, तमाम किस्म के डोमिनेशन से आज़ाद होगी। तो ये क्रिटिकल थ्योरिस्ट का क्रिटिसिज्म है रिगार्डिंग द मॉडर्न सोसाइटी, कि कैपिटलिस्ट सोसाइटी का जो प्राइम फीचर है वो डोमिनेशन है, और इस डोमिनेशन को हम जड़ से उखाड़ना चाहते हैं। ठीक है, तो ये क्रिटिसिज्म था मॉडर्न सोसाइटी पे। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस टॉपिक।